Assalamu alaikum. Good morning, and welcome to Urdu Bitcoin live transmission after a long time. It's been almost a month that I haven't been doing a live streams because of my father's sickness. I've been traveling back and forth to my country. Uh, so I'm back here in the United States and start doing the live streams now. My father is still in a critical condition, but doing better than before. So please pray. We'll do this stream in Urdu and English. English first, and then switch it to Urdu. We'll discuss the current price action, what's going on right now, and where we are heading after that, and also a quick update on Helium miner that I just got, and a very common issue that you might be facing as well if you just got it. So we will discuss that in detail. So stay with us. So उर्दू नाज़रीन को खुश आमदेद मेरे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर अगेन। तो ऑलमोस्ट एक महीना गुजरने के बाद मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ। बैक एंड फोर्थ पाकिस्तान आ जा रहा था, मेरे वाले साहब की तबीयत सही नहीं थी, तो वहाँ पर अभी भी स्टिल काफ़ी क्रिटिकल हैं। पहले से थोड़ा सा बेहतर हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ सिक। तो उनके दुआ कीजिएगा। आज की लाइव स्ट्रीम दोनों इंग्लिश उर्दू में होगी। पहले इंग्लिश में हम करेंगे, फिर उर्दू में स्विच करेंगे उसको। हीलियम माइनर भी एक अभी जो मैंने ऑर्डर किया था जुलाई में आई थिंक, तो वो मैंने रिसीव किया। उसको इंस्टॉल करने में जो इश्यूज़ आए वो आपसे डिस्कस करूँगा, और उसकी परफॉर्मेंस को हम कंटिन्यूसली देखते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो चलें शुरू करते हैं आज की स्ट्रीम। Okay, so as I discussed earlier, we are going to do this stream first live in English, and then we'll switch it to Urdu. So first of all, we are seeing a dramatic drop in cryptocurrency prices right now, especially Bitcoin, Ethereum, all the big ones. Right now, Bitcoin dipped down all the way to 56,500, and then came back and trying to come back over $58,000. Right now, just above $58,000. So it's a good sign that how hard it bounced back within few minutes. So same thing with Ethereum. It dipped down below $4,000, and now it's almost $4,100. It's trying to touch. So this price action, that all this the price action you are seeing here from all the way to $68,000 and then goes back to lower 50s, it was predicted. It was predicted by me almost a month ago when the last stream I did. You can see that this is the last stream I did 3 weeks ago. I did this and it is time stamped, and I was telling you guys that this breakout is not a breakout. The uptrend that you are seeing can reverse very quickly, and before it goes to all-time highs, like goes beyond $80,000 or $100,000, there will be a big crash. So that's what is happening right now. And I explained you in this video that it can go back, and I'm talking about 3 weeks ago. So you can imagine that Bitcoin was well above $60,000, and I was telling you guys at that time that Bitcoin can crash back to $52,000 at that time. So that's how accurate this prediction was, and it's not based on any hypothesis. It was based on the on-chain analysis, the data, and everything is available. But right now, I'm going to tell you that if this is a possibility, $52,000 is a possibility or not. Can Bitcoin dip $52,000? That's a big question. The answer of that is no. It's not going to go that far now. I think it's already at the bottom right here, and maybe it's just bouncing back right now. Maybe it'll try to go back again and try to break this $56,000 of major support. So it again try to break that $56,000 support again,
but it's not going to go down at that far, $52,000. Why? There are a couple of things that I would like to share with you. Uh, this is the biggest thing. Why? The on-chain analysis, accumulation balances, the funding shows that it's gradually is increasing, and right now the market in crypto market, the money is flooding in from investors, not just the big investors, not just the whales, but the retail investors. That's the main thing that was lacking in this rally that Bitcoin just had. There was no retail FOMOing in at that point, but now, right now, the next couple of weeks are very important because a lot of retail investors are coming back, and that is the thing that is going to attract them. This right now, this price drop is going to attract them, or in overall market, that they are going to invest heavily in coming 2 weeks. So, and that's the on-chain analysis showing us that a lot of money is coming back into the crypto market. So that's a very good news. Plus, if we look at some other strong indicators like RSI, uh, relative strength index, and where it is standing right now, so you can see it is below 25. It is no, it's 27, sorry. So it is below that range that we have, well below that range. So if you are an investor, you know that Bitcoin does not go below this range, that 30 range. Between it, when it goes up 70, it usually tend to stay 70 for a long time. Whenever it, and you can see that how far you can go. That Bitcoin does not stay too much below this line. But it can rally hard. It can rally hard to the upside, but not at this levels. So it is at its all-time low in RSI, and I can expect that it can go back in the action very quickly. That shows us, that RSI shows us this is the right time of buying opportunity. Now, what many people can say that, okay, the bull run is over. This is the timeline actually. November, December is the perfect timeline to end the bull run, and now we are most likely going to go in a bear market. For those of the guys that thinking that $68,000 was the maximum target, was the maximum price for this bull run, for them, I'll show you this CBBI historical chart index. Whenever it touches 100, that is the end of bull run. That is the peak. We are nowhere near. We are at 58. We are at the 58 index right here. You can see that. So we are right in the middle of it. We are in the middle of the bull run. And if you think that the bull run will end in December or January, so we don't have much time left to climb back. So that's why I'm saying the next couple of weeks are very important, and we would see a very steep gains, very parabolic moves upward in coming very near soon. Maybe today, tomorrow. So that's how I am bullish right now on this. That this is the time. This is the right time to go all in. We are seeing a final dip here, and after that, they're going to be a very parabolic move, very good gains that you can expect, and you can already see that how hard the Bitcoin is bouncing back from this level of support of $56,000. Uh, so this is the main reason, the main thing I want to discuss about the current market situation. You want to panic sell? Don't do that. Don't give away your Bitcoin cheap right now. It's going to go very high. Your cryptocurrency is going to go very high in near future. The next thing, which is in description of today's live stream, is Helium miner. I got a Helium miner this week. Uh, if you can see, this is a Bobcat Helium miner. Yeah, this is a Bobcat Helium miner that I got, and I installed it.
And the the issue I faced is that when you try to register it on your app, when you follow the instruction, you set it up, and you try to register the the miner on the blockchain network, it will flash an error message. The error message says there was an error constructing constructing the add hotspot transaction. Please try again later, and it keeps coming back no matter what you do. So that's my and I try to search this error, and not much things available on this. So that's why I try to include this specific error in my live stream, so I can tell you guys what is this error about. So there is a server on Helium onboarding the Helium miners, and right now a lot of Helium miners are going out, and people are receiving them and trying to onboard them on the blockchain. So that server is getting overwhelmed, and don't have a space so many time to accommodate all the requests at the time. So if you are in United States and uh, you are trying to register that, I would suggest to try to do it in the night time. That's what I did. I woke up at 3 o'clock in the night and tried to, and on the first go it was registered. But before that, the whole day I've been trying, and the same error keep coming back, and that was it. I was able to do it during the time when people are sleeping and people are not trying to onboard their miners. So that is one thing. The other thing is that when you start your miner, uh, it will take a good day or two to complete its first cycle. It has to go through a lot of checks, a lot of testing on its own, try to connect with the other hotspots nearby, and do a lot of testing. So by the time you'll see your earnings, it when you start installing it, it might be like 2 to 3 days when you start seeing it. And I'm kind of disappointed right now. The earnings are not that great, to be honest with you. I will try to move the antenna. I'll try to move the miner's location on different places to around my house, but right now it's not that great. I can tell you. In last 20, almost 24 hours, it only mined like a tenth percent, 1/10 of a coin. So it's not good. So that's one thing I would like to share, but I'll keep you guys updated as and when I'm trying to do different things with this miner. So you can decide whether or not you should buy one at this point. So that is a whole story about the miner that I just got, and trying to install it and trying to earn some HNT tokens. Uh, if you are new to Helium or HNT, you can go back to my videos that I introduced you and how to buy this miner and everything in my previous videos. That's it for the English viewers. I'm going to switch back to Urdu now. Thank you very much. Goodbye and see you next time. So अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि पहले इंग्लिश में करेंगे, फिर उर्दू में हम डिटेल में अपनी जो है वो ट्रांसमिशन करेंगे। इस वक्त बिटकॉइन आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे है। $56,000 जो है बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, जिसको उसको मेंटेन रखना है अगर इसको अपना बुल रन कंटिन्यू शॉर्ट टर्म में रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सब ये विलीबू और प्लान बी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब होगा बिटकॉइन। तो अगर इसको वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए इसको $56,000 की जो सपोर्ट लाइन है उसको मेंटेन रखना होगा, और इससे ऊपर इसको बाउंस बैक करना होगा, जैसे किया अभी इसने जस्ट ना अभी हमारे लाइव स्ट्रीम शुरू करते वक्त ही 56,500 तक ये नीचे गया है इस वीक में, और इसने बहुत ही क्विकली फिर उसके बाद बाउंस बैक किया और अभी यहाँ सस्टेन कर रहा है 58,000 के करीब।
तो ये एक प्राइस एक्शन जो कि पूरा 57,000 के, 68,000 के बाद ये नीचे आया है, इसको मैंने अपनी पिछली 3 हफ्ते पहले की वीडियो में प्रिडिक्ट किया था इसको। अगर आप लोगों ने देखी हो वीडियो, तो मैंने उस वक्त ये बताया था, और ये टाइम स्टैम्प के साथ मौजूद है मेरे चैनल पर ये वीडियो, जो लास्ट वीडियो थी मेरी 3 हफ्ते पहले। तो उसमें जो है काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कि फेक आउट हो सकता है, ये अभी ऊपर की तरफ जाते जाते एकदम नीचे आएगा दोबारा से, और फिर ये रियल जो उसको जाना है ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये पूरा प्राइस एक्शन मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था इसमें वीडियो में, और ये कि एग्जैक्टली उसी तरीके से हो रहा है। और अब जो है मैं इस जो आपको बात बता रहा हूँ कि क्यों मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, वो ये ऑन चेन डेटा है जो कि बता रहा है हमें कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही, वेल्स ही नहीं आ रहे हैं मार्केट में पैसा लेके, बल्कि जो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर मेरे जैसे, आप जैसे लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो हीटअप हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें पैसा लेके आ रहा है मार्केट के अंदर। तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा इन हो रहा है इस वक्त, तो डेफिनेटली वो फिर किसी न किसी एसेट्स के अंदर पाएगा। मोस्ट लाइकली जो बड़े एसेट्स हैं उनमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होना हम देखेंगे, बहुत तेज़ी के साथ बाइंग परचेजिंग शुरू होंगी, और ये इस चीज़ का निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरीके से सप्रेस की गई है मार्केट और जिस तरीके से नीचे लाया गया, तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी ज़ाहिर सी बात है इस ताक में बैठे हुए हैं कि वो जैसी मार्केट डिप करें हम बाय करें, और दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उनके बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पर फिल हुए हैं, यहाँ पर आके 56,600 पे, और इसके बाद से मार्केट फिर 58 को वापस बाउंस बैक किया है। बहुत तेज़ी के साथ देख रहे हैं कि विक जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट एक विक ही हो गई, होकर रह गई है, कोई अभी तक कैंडल की शक्ल अख्तियार से नहीं की है। तो ये हैंगिंग मैन कैंडल हो सकता है उस तरह की, या अगर होता है अभी टाइम है इसमें 4 आवर के चार्ट में हम, तो ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ग्रीन हो सकती है दोबारा से, दैट वुड बी अ ग्रेट साइन। यहाँ से बाउंस बैक करके ग्रीन हो जाती है ये कैंडल। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बता दी मैंने आपको। फिर अगर हम देखेंगे क्यों अब हम एंटिसिपेट करेंगे बहुत ही क्विकली, मोस्ट लाइकली इन नेक्स्ट आवर्स, और आज किसी वक्त भी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक करेंगे बहुत फास्ट, और मोस्ट लाइकली ये जो था ये बॉटम आउट हो गई है मार्केट। उसकी एक वजह ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो कि ये शो कर रहा है कि बिटकॉइन जो है वो अपनी जो रेंज होती है 30 to 70 की, उसके नीचे चला गया है। 30 जो है वो 27-28 की रेंज में है RSI में, जो कि बिटकॉइन के लिए बहुत ही अनयूजुअल है। इस इतनी नीची रेंज में कभी रहता नहीं है बिटकॉइन, जब भी डिप करता है आपने देखा है बहुत तेज़ी के साथ वापस ऊपर आता है। और इसका उल्टा है, इसका हिसाब नीचे वाली रेंज में ज़्यादा रहता नहीं है, और ऊपर वाली रेंज में काफ़ी लंबा रहता है। तो जब ये ऊपर यानी कि रैली करता है तो बहुत हार्ड करता है रैली, आप देखें काफ़ी रहता है ऊपर रैली के दरमियान, नीचे ज़्यादा नहीं रहता, नीचे फ़ौरन ही ऊपर आ जाता है, नीचे ज़्यादा टच भी नहीं करता है। इक्का दुक्का दफ़ा आप देखें उसने टच किया नीचे जाके इतना RSI ने, लेकिन फ़ौरन फ़ौरन वापस ऊपर आती है। तो ये बहुत बिल्कुल कितना लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है RSI, तो ये शो कर रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। जब ये शो करता है कि जब ये नीचे हो तो आप आंखें बंद करके उस एसेट में इन्वेस्ट कर दें, ये वापस ऊपर आने वाला है एसेट फिर बहुत तेज़ी के साथ। और जब ये ऊपर हीटअप हो जाता है 70-80 पे पहुंच जाए, तो उस आप समझ लें कि उस वक्त जो है आपको पैसे जो है सेव करने होते हैं फिर। तो ये काफ़ी अकेला ये खाली एक ही इंडेक्स ही काफ़ी होता है बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए कि अब कब बाइंग अपॉर्चुनिटी, कब सेलिंग अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था प्राइस सेक्शन का। करंटली जो पूरी मार्केट का यही हाल है जो हम बिटकॉइन का देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम ये आर्गुमेंट आ सकता है लोगों की तरफ से, हम कर सकते हैं कि भाई हो सकता है $69,000-68,000 जो भी टच किया वो, क्योंकि अब टाइम लाइन इतना रह नहीं गया, इतना टाइम जो है वो इतना ऑलरेडी हम नवंबर के एंड में हैं और दिसंबर, अब तो यही वो टाइम लाइन है बेसिकली जब ये बुल रन एंड होना चाहिए था, ये साइकिल एंड होनी चाहिए थी। तो हो सकता है $68,000-69,000 जो है वो टॉप था, और अब ये हम नीचे की तरफ बेयर मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। तो उनको जवाब मैं CBBI इंडेक्स से देता हूँ। जैसे मैंने इंग्लिश अपने सेगमेंट में भी बताया कि इस वक्त हम लोग जो है 58 पे बैठे हुए हैं, और मार्केट टॉप जो है वो 100 पे होती है, जैसे पिछले सालों में हुई, पिछली हर साइकिल में मार्केट जो है वो 100 के ऊपर टॉप होती है। तो जब CBBI इंडेक्स प्राइस से बहुत ऊपर निकल जाता है और 100 को टच करता है, उस वक्त जो है वो
मार्केट टॉप आउट होती है। हम अभी बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा भी जो ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन जो है वो भी रहता है, और बहुत ये सी बी पे इंडेक्स जो हमें शो करेगा बहुत स्पीड के साथ, जैसे इतना स्टीप देखें आप कर्व्स आते हैं एकदम से तेज़ी के साथ ऊपर आते हैं, ये देखिए कितना स्टीप कर्व आया है ऊपर। तो इस तरह का हम कुछ जो है बहुत जल्दी देखेंगे। अगले 1-2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा गेंस के लिए। ये होता है जो डिप अभी आई है, जो सारी चीज़ें तो सस्ती लगी हुई हैं मेरे हिसाब से। तो आप अगर देखें तो कि सेल लगी हुई है ऑलमोस्ट 5% 10% की सेल लगी हुई है। तो तमाम ही अच्छे कॉइन में 16% सेल लगी हुई है। वीकली 30% डाउन है के डी ए कार्डिना, जो कि बहुत ज़बरदस्त चेन है। इसको मैं अलग से इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि कार्डिना जो है सोलाना से भी अच्छी चेन है, और इसके जो प्राइस है यहाँ से इजीली 10x हो सकते हैं। यहाँ से हम $200 का एक ये कॉइन देख सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आने वाले दिनों में। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। शीबा, आई डोंट वांट यू टू स्पेंड एनी मनी ऑन दैट। शीबा को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। फैंटम अगेन एक और 30% वीकली जो है डाउन हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट और बहुत ऊपर की तरह का। हेलियम हमने अभी आपको मैंने इनका इसका बॉक्स दिखाया है, $40 का है। अगर आप एक ये $50 से ऊपर चला गया था, तो अगर आप एक कॉइन भी रोज़ाना की माइन करना शुरू कर दें इसमें, दैन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। लेकिन अभी वो उसको मैं टाइम है थोड़ा सा, मैं इसको चेक करूँगा तो बताऊँगा, फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा उसके बारे में। हीलियम के बॉक्स में मैंने आपको दिखाया भी अभी इंग्लिश सेगमेंट में भी कि उसमें एक एरर आता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अगर वो आपको भी आ रहा है वो एरर, तो आप रात के टाइम में, अगर यूएस में हैं तो रात के टाइम में उस एरर को जो है बाईपास करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सर्वर जो है ऑनबोर्डिंग सर्वर वो बिजी होता है दिन में, तो वो एरर देता है कि इस वक्त जो है वो जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा, एड हॉटस्पॉट का जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पा रही। आप अगेन ट्राई करें, तो रात को ट्राई करें। मैंने भी 3 बार ट्राई किया तो वो फ़ौरन हो गया था। तो ये हीलियम का कॉइन भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके टोकनॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसका बॉक्स मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आपको अपडेट रखूँगा आगे आने वाले दिनों में कि वो किस तरीके से माइन कर रहा है। मुख्तलिफ उसकी पोजीशंस जो है वो चेंज करके उसको चेक करेंगे। तो इस वक्त बहुत सारे कॉइन, बड़े अच्छे कॉइन्स जो हैं वो मैं कहूँगा कि 10 to 20% जो है वो सेल पे लगे हुए हैं। ओवरऑल मार्केट जो है 5% डाउन है। तो ये हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले। ये आखिरी दफ़ा इतना इतना बड़ा प्राइस एक्शन आ रहा है इस वक्त, तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ऑब्वियसली हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते किसी वक्त, लेकिन इस वक्त जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपको मिली है, और ये बहुत स्पीड के साथ रिवर्स होती हुई नज़र भी आ रही है इस वक्त कि कितनी स्पीड से 5600 56,500 से दोबारा वापस 58,000 पे बिटकॉइन जंप करेगा वापस। इथेरियम भी इसी तरीके से 100 पॉइंट्स या $100 जो वापस जंप करेगा। तो आज की स्ट्रीम में इतना ही। अगर कोई और मेजर चेंजेस आते हैं, न्यूज़ मैंने इतनी ज़्यादा कवर नहीं की हैं, बड़ी न्यूज़ हैं फंडामेंटल्स के हवाले से, जो कि इंग्लिश चैनल्स पे तो अवेलेबल हैं, उर्दू पे इतनी नहीं है अवेलेबल। तो हो सकता है कि न्यूज़ का सेगमेंट कल की वीडियो होगी हमारी, उसमें हम न्यूज़ का सेगमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, थोड़ी पिछली मोस्ट रिसेंट बड़ी न्यूज़ पे नज़र डालेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट रखते हैं। क्रिप्टो इस वक्त crypto.com क्यों बढ़ा हुआ है, तो सब जानते हैं कि स्टेपल सेंटर है लॉस एंजल्स में, उसको crypto.com ने एक्वायर कर लिया है, और उनसे डील हुई है काफ़ी बड़ी $700 मिलियन की 20 ईयर्स की है। वो वहाँ पर जो है स्टेबल सेंटर नहीं कहलाएगा वो, बल्कि लेकर्स और जो क्लिपर्स हैं वो खेलेंगे वहाँ पर अपने होम सीरीज़, तो वो crypto.com सेंटर कहलाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी इस वजह से बाकी सब चीज़ें गिरी हुई हैं, लेकिन वो कॉइन काफ़ी बड़ा हुआ है। तो इसी तरह से एवलांच ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अभी, और जो मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैना वगैरह या सैंडबॉक्स, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक फेसबुक ने जिस तरीके से अपने आप नाम चेंज करके मेटा रख लिया है, मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं वो। तो इस तरह के ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कॉइन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस शॉर्ट टर्म बेयर मार्केट के अंदर भी। ये वजह है।
तो ये क्विकली न्यूज़ आपके लिए कवर की मैंने, प्राइस आपको बता दिया, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ वापस आएंगे प्राइसेस। ये डिप जो था पहले से प्लान था, पहले से इसका होना भी ज़रूरी था। एक्यूमुलेशन यहाँ पर इस जब होगी तभी लोग अट्रैक्ट होंगे, एकदम से इतना सारा पैसा जो आ रहा है वो अट्रैक्ट होंगे और एकदम से तेज़ी के साथ बाइंग होगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो एक राइट डायरेक्शन में है, बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इसमें गेंस बाकी हैं अगले 1-2 महीने में। जितनी भी बाकी है बुल रन, उसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा गेंस हैं। और जब वो करीब आएगा उससे, जब बेयर मार्केट के, तो हम जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन आएंगी, जैसी इंडेक्सेस बताएंगे मुझे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म रखूँगा उसके बारे में। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म रहने की नहीं है, करंट प्राइस टारगेट्स और एक्शंस को देखने की नहीं है, समझने की नहीं है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आपको इन चीज़ों से आगाह रख सकूँ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कल, मोस्ट लाइकली इसी टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम।